Welcome back, ladies and gentlemen, to Pakistan EdTech Summit 2021. Next up, we've got a very interesting case study by Mr. Mohammed Nabeel from Edvon. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Nabeel, founder and CEO of Edvon. सबसे पहले I would like to discuss what Edvon is doing and why we are doing the thing. That is the first most important thing. As you all know that in Pakistan there is unemployment. There is a huge unemployment. The reason behind this particular unemployment is not because of not having a good job. It's mainly because of we most of our youth do not have the skill set that is required in the industry. मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाता हूँ कि how we started. I did my masters in robotics from South Korea, and I got admission in PhD in Germany Technical Munich. And I came back to Pakistan. What I did actually, I start teaching robotics and coding to my cousins who were in school, like in 6th or 5th grade. I was really surprised to see when I was, teaching them within 2 or 3 weeks, they were able to make the project that I used to make when I was at NED University. At that time, I realized that students have a lot of potential, but we are not giving them an opportunity to learn the new skills that is required in the 21st century. At that time, I realized how about starting a venture in which we start teaching this particular skill set, the 21st century skill set, like critical thinking, problem solving skill set, robotics, coding, and all these things when they are in schools. Why I was targeting the schools is mainly because of, let me just give you an example. जब हमारे लेट्स सपोज अगर आप कोई भी दरख्त लगाते हैं तो इनिशियली जिस टाइम पे दरख्त लग रहा होता है उस टाइम पे आप उसे जो शेप देना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो आप उसी टाइम पे आप उसे दे सकते हैं. लेकिन इमेजिन कि अगर एक दरख्त बड़ा हो जाए उसके बाद अगर आप चाहें उसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप चाहेंगे तो आपको उस दरख्त को काटना पड़ेगा. एग्जैक्टली पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एग्जैक्टली हम सेम काम कर रहे हैं. अगर आप देखें हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये सिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टडी करो, रट्टा लगाओ और अच्छे ग्रेड्स ले लो. उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तब भी उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि दे हैव टू हैव अ गुड ग्रेड्स, ठीक है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्किल्स. उसका नुकसान ये होता है जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन दे डू नॉट हैव द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, और इसी वजह से उनको जॉब मिलना मुश्किल हो रही होती है. तो एडवान इज एक्जैक्टली टैकलिंग दिस पर्टिकुलर इशू कि हम बच्चों को स्कूल लेवल से ही ये माइंडसेट डेवलप करें कि वो स्कूल में टेक्निकल स्किल्स को सीख सकें. तो हम अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हमारी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे अगर मैं रोबोटिक्स फॉर किड्स वाले कोर्स को अगर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कि हमने बच्चों को ग्रेड 4 से ही टेक्निकल स्किल्स देना शुरू कर दिए हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री की, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट. अब बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, देखें टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, खास तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, टीम मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं. ये ऐसे स्किल्स हैं कि आप फ्यूचर में चाहे डॉक्टर बनते हैं, फ्यूचर में चाहे पॉलिटिशियन बनते हैं, आपको ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप देखें वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, और फिर उसके बाद बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सारे वो स्किल्स सिखाते हैं जो कि बच्चों को आगे फ्यूचर में हेल्प करते हैं. और ये स्किल्स इसलिए भी ज़रूरी हैं आजकल के टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि आप देखें कुछ एक ज़माना ये था कि जब कंप्यूटर आए थे तो लोग कंप्यूटर बच्चों को नहीं सिखाते. नहीं, इनिशियली कंप्यूटर जिन लोगों ने सीखा वो लोग बहुत तेज़ी से ग्रो हो गए. इसी तरह से आजकल के दौर में कोडिंग और रोबोटिक्स एक ऐसा स्किल है कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे फ्यूचर में जो जॉब मार्केट है उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एक आपको छोटी सी इस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड लाइक 4 years ago. वी मेक robotics or STEM a part of curriculum in more than 150 schools in Pakistan, which means कि बच्चे ग्रेड 4 से ग्रेड 8 तक रोबोटिक्स और कोडिंग को एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम पढ़ रहे थे. इट्स नॉट लाइक कि उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है. उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6-7 क्लास में, 8 क्लास में हैं, जिन्हें अभी से अपनी वेबसाइट डेवलप करनी आती है, अभी से उन्हें कोडिंग आती है, अभी से उन्हें
टीम के अंदर प्रोजेक्ट बनाने आते हैं। आप इमेजिन करेंगे वो स्टूडेंट जिनको अभी से ही ऐसा एक्सपोजर मिल गया, जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो दे ऑलरेडी हैव द स्किल सेट, they will be mainly working on the product development, and that's how we can accelerate the technological and economical growth of Pakistan. I just want to show you one video so that you have an understanding के पाकिस्तान में कितने सारे बच्चे इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो सेंटर में 17-18 ऑनर्स को रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोबोटिक्स पवेलियन ऑर्गेनाइज करवाने का है। I feel very great that Edvon team has facilitated us and trained our students. As you saw that there are thousands of students in Pakistan who are already learning this type of skills, and they are competing not their fellow mates there, but they are also competing with the university students. So our objective and our vision is, we should have a we should teach the skills to the student right from the early ages, so that they, when they are in university, they should able to earn money from that particular skill. This is the only way move forward if you want to see Pakistan a developed country. Because imagine, so the cycle is something like that. If we teach the skill set at the school level, we are giving the students an opportunity to, instead of wasting their time on playing games and all this thing, they should spend their time on the productive activities like coding, robotics, and all this thing. And if we are doing this thing, it means we are teaching all the skill set to the students when they are in school. So imagine if today, if we make this thing a mandatory part of the curriculum in all the schools in Pakistan, then after like 10 to 15 years, there will be a students, there will be a bunch of students who will be joining university who are already technically sound. And at the university in the 4 years, they will have like 4 years to develop new products using that particular skill set that they have learned in their school. So imagine in the university, students are making different products, and there will be some products who will be, they will be start exporting these products. They will be, locally selling these products. So in this way, we'll have a lot of innovation from the universities, and that's how in future we can accelerate the technological and economical growth of Pakistan. So this is what Edvon is doing, and I hope you people like our idea. And if you have any suggestion, if you want us to grow more, then give us your feedback so that we can improve more to bring the innovation from the universities in Pakistan by teaching the skill set to the student right from the school level. Thank you. Thank you very much, Mr. Mohammed Nabeel from Edvon. So it has been an eye-opener about how important STEM and robotics are. We've realized that throughout Pakistan EdTech Summit. So thank you so much for your time. Ladies and gentlemen, those who want to learn more about the kind of work that Edvon is doing, we've shared some links in the description. So please get in touch with us if you want us to personally connect you with the Edvon team. Now, please stay tuned. We've got another impactful case study